Today we are discussing about pragmatism जहाँ को कि ओडिया रे कहा जाए प्रयोगवाद बोलिका। तो फास्ट आमर आदर्शवाद बा आइडियलिज्म वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी रे जाउची। फॉर प्रथम तो आइडियलिज्म आसिला, देन आसिला आमर प्रकृतिवाद बा नेचुरलिज्म, देन थर्ड रे आमर 19th सेंचुरी को कवर कला, 17 टू 18 कला के नेचुरलिज्म कला, देन आमर 19th सेंचुरी को कवर कला कि प्राग्माटिज्म जोटा कि प्रयोगवाद कहा जाए। प्रयोगवाद रो अन्य नाम बहुत अछि जे जेमति कि संपरीक्षावाद, क्रियावाद, क्रियाकरण होजी तार अर्थ। तो फादर ऑफ प्राग्माटिज्म रो फादर होजंदी कि चार्ल्स सैंडर्स पर्स होजंदी तार फादर, जे कि जन्म ग्रहण करथले बा बॉर्न ऑन 10 सितंबर 1839 आउ मृत्युवरण करथिले 1914 रे। तो डेवलप pragmatism in the 1870s to 1880s भितरे ही pragmatism बा प्रयोगवाद ता डेवलप होइतिला। emphasized practical consequence of ideas, तले एटा practical consequence बा क्रियावाद उपरे फोकस करथिला बा practical consequence माने कि प्रैक्टिकली केमती गोटे घटना घटुची तार ऊपर ही फोकस करथिला। से आइडिया ही प्रदान करथिला से की फिगर इन फिलोसॉफी। तले pragmatism जो तर फिलोसॉफी रे यार भूमिका अछि, मैथमेटिक्स रे अछि एंड साइंस रे मध्य रहउची pragmatism। इन्फ्लुएंस्ड विलियम जेम्स एंड जॉन ड्यूई। तले एटा इन्फ्लुएंस हेतला का द्वारा जॉन ड्यूई आउ विलियम जेम्स को द्वारा एटा इन्फ्लुएंस होइतिला। तो वर्तमान देखिबा मीनिंग ऑफ pragmatism। तो pragmatism रो अर्थ कोन, यार व्युत्पत्तिगत अर्थ कोन, इटोमोलॉजिकल मीनिंग बा मीनिंग कोन हमें जानि परबा जा थ्रू रे pragmatism टाको हमें आउरी आइडेंटिफाई करि परबा। तो वर्तमान देखिबा मीनिंग ऑफ pragmatism। The term pragmatism comes from the Greek word pragma meaning action. Pragma refers to action, practice or deed। तो से कहला कि ये जो शब्दटी pragmatism एडा आसी अछि गोटे ग्रीक वर्ड जोटा होची प्राग्मा, जहार के अर्थ हेउची एक्शन बा कार्य बा क्रिया। प्राग्मा रेफर्स टू, ताले प्राग्मा रो अर्थ कोन, एक्शन, किछि क्रिया करिबा, किछि काम करिबा, प्रैक्टिस करिबा आउ डिड अभ्यास को बुझाई थाए। देन प्रैक्टिकल भी आसी अछि, इट एम्फसाइजेस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ताले प्रैक्टिकलिटी ऊपर अधिका फोकस करि थाए। तो वर्तमान देखिबा अदर नेम्स ऑफ pragmatism। तो pragmatism रो आउ सबु ना कोन रहउची देखिबा। इंस्ट्रूमेंटलिज्म एसोसिएटेड विथ जॉन ड्यूई को हेतु यार ना हला इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म। मेन थीम ऑफ pragmatism, ताले मुख्य लक्ष्य मेन थीम कोन रहउची pragmatism रे ताकू देखिबा। वर्तमान हमें pragmatism focus on practicality, application and effectiveness. This theme is reflected in its various interpretation including instrumentalism, experimentalism and practicalism। ताले से कहउची कि मेन थीम pragmatism रो होउची या प्रैक्टिकलिटी ऊपर प्रैक्टिकल ऊपर फोकस करि थाए। गोटे तथ्य को तर्जमा करि थाए, प्रैक्टिकली थिंक करि थाए ना, ये अलगा जो हमर सब बाद रहिला ता थारु भिन्न थिला। तो एथरे या इंक्लूड कर थाए काकू इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंट थ्रू रे केमती गोटे शिक्षा दिया जाई परिबो कि
तार ऊपर ही फोकस करता है। व्हाट वर्क्स इज व्हाट मैटर्स। pragmatism focus on practical consequences ତାହେଲେ practical consequence practical घटना उपरे यह अधिक फोकस देइଥାଏ। यह अन्य कोनसिरे विश्वास करे नाही एवं एम्फासाइज एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट उपरे आ एक्सपीरियंस। जॉन ड्यूइंग का मतटा जो रोचे अभिज्ञता रो निरवच्छिन्न पुनर्गठन को शिक्षा कहा जाए तो सेही भलिया ए pragmatism सहित तार लिंक रहउची अधिका। तो pragmatism रो चिंताधारा आउ जॉन ड्यूइंग को चिंताधारा प्राय तो सिमिलर आसी जाए। सेथि लागि एठी प्रैक्टिकल ऊपर फोकस दिया जायछि आउ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर भी फोकस दिया जायछि एंड एक्सपीरियंस ऊपर भी अभिज्ञता ऊपर भी फोकस दिया जायछि। देन जजेस आइडियाज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस प्रायोरिटीज एक्शन एंड रिजल्ट्स ओवर थ्योरी। कोर आइडिया कौन रोज देखिबा आइडियाज आर वैल्यूड फॉर देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड इंपैक्ट। प्रैक्टिकलिटी ऊपर अधिक फोकस करे। देन एम्स ऑफ pragmatism pragmatism रो लक्ष्य कोन टू इंट्रोड्यूस pragmatism and its key concepts to highlight the practical focus of pragmatism highlight करियो highlight the practical focus of pragmatism to provide a concise overview of pragmatism's main themes and interpretations। practical problem solving practically problem बा समस्या रो समाधान को बळी भाबे practical थ्रू रे हेई परिबो ता ऊपर फोकस करता है। इफेक्टिव एक्शंस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वास्तववाद पर मध्य फोकस करिଥାଏ एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस थ्रू रे केमती लर्निंग हो तारि पर फोकस करता है। एम्फसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्रायल एंड एरर्स एक्सपोनेंट ऑफ pragmatism तले pragmatism रो एक्सपोनेंट बा समर्थक माने हेले चार्ल्स सैंडर्स फाउंडर ऑफ pragmatism तले pragmatism रो फाउंडर होचंदी चार्ल्स सैंडर्स एंड विलियम जेम्स popularized pragmatism। देन जॉन डीवी डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो एई माने होचंदी तार चीफ एक्सपोनेंट ऑफ pragmatism। ले वेस्टर्न गला कथा गला तो ईस्टर्न रे जाउचंदी टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर एंड श्री अरविंदो कि pragmatism को सपोर्ट करूथिले। तो टाइप्स ऑफ pragmatism humanistic pragmatism emphasized on human experience and values। ताले humanistic pragmatism जहा कि human experience और values ऊपर फोकस करते। then experimental pragmatism focuses on scientific experimentation। तो experimentation कथा उठिला माने तो scientific कथा उठिबो तो विज्ञान माध्यम रे कोबळी भाबरे एक्सपेरिमेंट थ्रू रे pragmatism तो experimental pragmatism ताकू कहछ तो nominalistic pragmatism emphasized on practical consequences। practical consequences को जोड़ा emphasize दउची ताकू ही कह जाउची nominalistic pragmatism। और देन ता ऊपरटा जो रहउची जे एक्सपेरिमेंटल pragmatism तो सेटा फोकस करची का ऊपर साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर फोकस दउची। देन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू क्लासिकल pragmatism और न्यू pragmatism। तले तळे व्यापक भाबर हमें देखिबा जे pragmatism को केमती डिवाइड कराइछि सेटा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि जोटा कि होउची क्लासिकल pragmatism जोतरे कि पर्स रहउचंदी जेम्स रहउचंदी ड्यूई रहउचंदी। देन न्यू pragmatism को रिचर्ड रॉर्टी एंड अदर्स तार समर्थक रहउचंदी। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग तले pragmatism हिसाब रे मेथड्स ऑफ टीचिंग रो मेथड को बोलेबा दरकार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये सब जॉन डूइंग करो जो भलिया भाबे टीचिंग मेथड थला ये तारी पर फोकस करछि। देन लर्निंग बाय डूइंग
रोल ऑफ टीचर टीचर रोल देखिवा फैसिलिटेटर गाइड एंड मेंटर then the teacher encourages experimentation and exploration the teacher experiment ଆଉ exploration ପାଇଁ କି encourage କରିବେ provides guidance and support ପିଲା ମାନଙ୍କୁ guidance ଆଉ support provide କରିବେ କି teacher then fosters critical thinking and problem solving critically think କରିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ এই କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ experiential learning and practical application focus on practical consequences and effectiveness of ideas then encourages experimentation and empirical evidence applies practical approaches to understanding the human behavior practical approach apply करे ये human behavior को understand बा बुझिबा पई practically think करथे then discipline is viewed as self control responsibilities and freedom to learn discipline should be internally motivated derived from experience and focus on self regulation curriculum रहुची कोन child centered experience based flexible relevant to real life situations focused on problem solving and critical thinking यारी ऊपर ही पाठ्यक्रम बना जीवो बोलिका pragmatism रो मत तदरे कोन सब्जेक्ट इंक्लूड रहउची देखिबा integrated interdisciplinary relevant to real life focused on problem solving then pragmatism's contribution to education प्रति तार contribution कोन रहउची देखिबा experiential learning अभिज्ञता माध्यम रे शिक्षण देन आछि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस एम्फासाइज ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स ऊपर एम्फासाइज करथाय ता सेटा होची तार कंट्रीब्यूशन एजुकेशन प्रति तार कंट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी नमनीय भाबे परिवर्तनशील द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड होचंदी विलियम किल पैट्रिक होचंदी एडा होची इंपोर्टेंट तो प्रोजेक्ट मेथड रो फादर होचंदी विलियम किल पैट्रिक एंड ए स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी ताले विलियम किल पैट्रिक के स्टूडेंट होचंदी जॉन डेवी करो emphasizing hand on real world projects to promote learning and problem solving skills तो आज पे एतिक थैंक यू